Anyway, let's proceed ahead with your mock for ONGC, and you are from finance and account background, right? You're chartered Yes. accountant. So let's start with your brief introduction, Divya, first. Uh, Good morning. Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. As you know, my name is Divya. I was born and brought up in Gwalior. I am a qualified chartered accountant. I got this title of CA in year 2022. If talk about my articleship experience, so I have worked on various fields like direct, indirect taxation, auditing, including stock audit, which was basically monthly physical verification and finance. My hobbies are doing yoga and meditation, and I love to read books, and I always keen to explore different dimensions. Currently, I am preparing for PSUs. This was all brief about it. Okay, Divya, when did you complete your articleship? So 2020. Okay, so last now 2-3 years, what are you doing? Sir, after 2-3 years, सर लास्ट ईयर मेरा सीए फाइनल कंप्लीट हुआ था और लास्ट ईयर से फिर अभी मैं पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आपने कहीं जॉब ज्वाइन नहीं किया? यू नॉट ज्वाइन? सर मैंने पहले ऐसा सोचा था कि 6 महीने मैं करके देखती हूँ। एक्चुअली मुझे ना पीएसयू ही ज्वाइन करना था, तो मैं सोचा 6 महीने प्रिपरेशन करके देखती हूँ। फिर मैं 6 महीने बाद दोनों साथ साथ मतलब कहीं प्राइवेट जॉब करके और फिर पीएसयू के लिए प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट करती हूँ। लेकिन सर जब उसके बाद ना फिर काफी सारे एग्जाम्स आ गए, तो फिर किसी किसी में 2 फेजेस रहते हैं एग्जाम के, तो मेरा फर्स्ट फेज क्लियर हो गया था, तो फिर सर इतना टाइम नहीं रहता था, मतलब जैसे कुछ 8 दिन या और भी कम टाइम मिलता था प्रिपरेशन के लिए। तो मैं सर जॉब ज्वाइन करने के सोचा, तो फिर नहीं कर पाई क्योंकि एग्जाम्स ही आ गए, फिर इंटरव्यू आ गए, तो इस वजह से नहीं किया मैंने ज्वाइन। और कौन कौन से इंटरव्यू दिए हैं आपने? सर मैंने एचपीसीएल दिया है और एनटीपीसी दिया है। एनटीपीसी का भी रिजल्ट पेंडिंग। तो अगर आपका एनटीपीसी एचपीसीएल हो जाता है तो क्या करेंगे आप? ओएनजीसी ज्वाइन करेंगी या एचपीसीएल ज्वाइन करेंगी? नहीं सर, एचपीसीएल का हो गया, उसमें नहीं हुआ मेरा। ओके, तो अभी आपका कोई पेंडिंग है रिजल्ट? सर एनटीपीसी है और बाकी इंटरव्यूज पेंडिंग है। तो कहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे? आपके पास तो बहुत सी ऑप्शंस हैं। सर ऑप्शन तो है, मैंने सभी जगह ट्राई किया, लेकिन मुझे ओएनजीसी सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब मैं ओएनजीसी ही ज्वाइन करना चाहूंगी। मेरा मतलब इंटेंशनली मैं ओएनजीसी ज्वाइन करना चाहती थी। बाकी सब ये था कि अगर ओएनजीसी का नोटिफिकेशन नहीं आता तो बाकी तो कहीं ना कहीं जॉब करनी ही है ना, इसीलिए मैंने बाकी फॉर्म भी डाले और वहाँ के एग्जाम भी दिए, तो वो क्लियर हो गए सर। तो इसलिए मेरा इंटरव्यू कॉल है। Divya, why you are interested in public sector only? Because in corporate also there are quite good opportunities. सर क्योंकि मुझे सर ऐसा लगता है पर्सनली, कई सारे रीजन है जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है मुझे पीएसयू ज्वाइन करना चाहिए सर। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी कोर कंपनी में काम करना, लाइक ओएनजीसी। सर यहाँ पे वर्क कल्चर काफी अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। डाइवर्सिफाइड लोगों के साथ काम करने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करने को मिलता है। और सर ये पीएसयू जो है कंट्री की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट करती है, तो आई थिंक एज अ फाइनेंस प्रोफेशन दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सर्विंग द नेशन एज वेल, एंड ऑल्सो इट इज अ सोशली प्रेस्टिजियस जॉब। सो आप किस लेवल तक ग्रो कर सकती हैं पब्लिक सेक्टर अगर ज्वाइन करती हैं? यू हैव एनी आइडिया अबाउट योर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, दिव्या? यस सर, हम अगर हम पीएसयू में रहे ज्वाइन करते हैं, तो सर सबसे पहले तो काफी सारे लेवल्स होते हैं। मैनेजर लेवल, फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, फिर उसके बाद सीएमडी। अच्छा, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी सीएमडी of any PSU who is chartered accountant? सर करेंटली आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, मैंने पढ़ा तो था, मुझे याद भी है किसी रेप्यूटेड पीएसयू के हैं, लेकिन करंटली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। Have you seen our website of ONGC? यस सर। Could you see some chartered accountant as directors? यस सर। सर मिस्टर वी कुमार राजू, ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और ये पिछले 21 साल से प्रैक्टिस में है। So who is our petroleum minister? सर पेट्रोलियम मिनिस्टर है श्री हरदीप सिंह पुरी जी। And how many subsidiaries do we have in ONGC? सर
आई थिंक सर 36 सब्सिडरीज हैं. Can you name some major subsidiary of ONGC? मेजर, यस सर. HPCL Hmm. and Okay, MRPL. Divya, if you could not get selected in HPCL, how do you think you will get selected in ONGC? सर दिस इज नॉट द रीजन सर. हर कंपनी का अपना अपने एम्प्लॉय को लेके थोड़ी सी अलग एक्सपेक्टेशन होती हैं. ये हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट से हम फुलफिल नहीं कर पा रहे तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी हमें नहीं देगा. या HPCL is our organization only, no? That belongs to सर ONGC. उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अलग होंगी और ओएनजीसी की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अलग होंगी. Hmm. Okay, tell me why you think you were not selected in HPCL? सर मैंने तो अपना बेस्ट दिया था. आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा मैं इतना सर शायद में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था या थोड़ा सा कहीं एक्सपीरियंस कम था या ऐसा कुछ. Okay, if you put yourself in our place, why will you select yourself? Sir, I think, as I believe, I possess all the required quality which you have mentioned in your job notification. As I'm a dedicated person, sir. जब भी मुझे कोई टास्क दिया जाता है मैं उसे 100% 100% मतलब 100% कंप्लीट करती हूँ और मतलब सर टाइम से पहले कर लेती हूँ. और सर इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, इसकी वजह से मैं अपने एकेडमिक्स में भी मैंने सर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और सर मैं एक डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन हूँ. मैं तब मुझे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके करना पसंद है. सर मैं अपने काम को प्रायोरिटी बेसिस पे करती हूँ जिसकी वजह से मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो कभी डेडलाइन मिस नहीं करते. मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम से पहले कंप्लीट कर देती हूँ. और सर मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ नई चीज़ों को सीखने के लिए. एंड आई थिंक एज अ फ्रेशर दिस क्वालिटी ऑफ माइंड विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. But then you don't have experience, and today we have got so many experienced candidates who are going for interview. सर बट आई डोंट थिंक सो एक्सपीरियंस और फ्रेशर से ऐसा कुछ डिफरेंस आएगा क्योंकि ट्रेनिंग तो सबको इक्वली दी जाएगी. और आई थिंक एज अ फ्रेशर मैं ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगी, अपना फोकस ज़्यादा कर पाऊंगी क्योंकि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ नई सीखने के लिए. और सर अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आता है और भले उसके पास एक्सपीरियंस है वो नहीं अगर सीखना नहीं चाहता तो सर उससे तो ज्यादा बेटर जो है वो फ्रेशर है जो जो सीखना चाहता है. Okay, okay, over to you, Sudhir. Yeah, yeah. Hi, Divya. है सर. So, uh, can you tell me about the history of ONGC? यस सर. ये ओएनजीसी का जो फाउंडेशन था वो श्री केशव देव मालवीय ने रखा था उस टाइम के नेचुरल रिसोर्स के मिनिस्टर. सर ये 1955 में रखा था एज अ ऑयल एंड गैस डिवीजन के फॉर्म में. फिर उसके बाद सर ये ऑयल और गैस डायरेक्टरेट बना. फिर ये कमीशन बना. फिर उसके बाद ये कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हुआ 1945 में. और सर 1997 में ये एक नवरत्न कंपनी बन गई. फिर उसके बाद 2010 में सर ये एक महारत्न का स्टेटस को मिल गया. So, what is the difference between Navaratna company and Maharatna company? सर ये स्टेटस होते हैं जो कंपनीज को मिलते हैं मतलब इसके बेसिस पे कि कौन सी कंपनी जो है इन्वेस्ट कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के. अगर हम महारत्न की बात करें तो महारत्न जो है 5,000 करोड़ और 15% ऑफ नेटवर्थ इतना अ, अ, अपना इन्वेस्ट कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के. एंड नवरत्न कंपनी जो होती है वो 1,000 करोड़ तक कर सकती है. Okay. So, can you tell me the importance of cash statement in accounting, cash flow statement? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमें जो हमारा कितना कैश आउटफ्लो हुआ कितना कैश इनफ्लो हुआ इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारे पास एक्चुअल में अभी कितना कैश है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये इसकी इंफॉर्मेशन देता है. Why is it so important for a company, the cash flow? If the cash flow is not good or it's negative, what happens?
तो सर मीन्स हमारे पास कैश शॉर्टेज है, ये बताता है। तो हमें कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में नहीं है, या तो ये हम कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। Okay. What do you mean by current ratio? सर करंट रेशियो जो होता है, इस करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स कितनी हमारे पास एबिलिटी है कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। मीन्स असेट मतलब हाँ, हमारे पास कितने लिक्विड फॉर्म में नहीं, इन दी फॉर्म में हमारे पास कितनी एबिलिटी है कि हम अपनी करंट लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं, ये करंट रेशियो। So what is the ideal current सर ये ratio? 2:1 होता है। What is it? 2:1। Ideally, it should be more than 2. That's what you are telling. Sir, are you asking if current ratio is 2:1, is greater than 2:1? No, it should be more than 2. That's what you are telling, right? नो, Hmm. आई एम टेलिंग आइडियल रेशियो होता है 2:1, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। What happens if the current ratio is more? It is good, right? Sir, Your liabilities are more than covered, and you have uh, more current assets than current liabilities, right? So what is bad in that? For example, if I have a current ratio of 3, sir, just a minute. you understood my question? What I'm asking is, you told ideal current ratio is 2. For example, if a company has current ratio of 3, is there something wrong with that? No, sir. Is it good or bad? Sir, it is good. Okay. And what is how do you calculate the net worth of a company? Net worth, sir, equity share capital, preference share capital plus reserve and surplus. Okay. For example, if you are given uh, mm, a balance sheet of a company, right? Yes, yes, sir. Or you know the share price of a company, how do you know, how do you calculate the net worth of the company? बैलेंस शीट है, और शेयर कैप इक्विटी, सर Share कैन यू price, yeah. रिपीट? शेयर प्राइस निकालनी है। No, no, you have share price, you know the share price. यस सर, मल्टीप्लाई, अगर हम शेयर प्राइस इंटू जो भी हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट वर्थ Yeah. नंबर ऑफ शेयर। Okay. And for example, when you are auditing a company, right, what do you look at? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं सर, ट्रू और फेयर भी देखते हैं बेसिकली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं जो वो ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। Okay. And what do you mean by cash ratio? कैश रेशियो, इट कवर सर कैश 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 इन हैंड, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। No, that's fine. How do you calculate cash ratio? सर It is a measure, right? Liquidity measure of a company's. So what is the difference between current ratio and cash ratio? सर करंट रेशियो जो है, हमारे पास कितनी करंट असेट्स हैं जो कि हमारे करंट लाइबिलिटी को पे कर सकती हैं, वो ये बताता है। और कैश रेशियो बताता है हमारे पास अभी कितना कैश है। Mm-hmm. तो इसे मेजर ऐसे ही करेंगे सर, कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी अपॉन हमारी लाइबिलिटी। Okay. What are your hobbies? सर योगा एंड मेडिटेशन। So which form of yoga you do? सर योगा में तो ऐसे कुछ आसन्स हैं जो मैं परफॉर्म करती हूँ, Mm-hmm. जैसे कि सर जैसे भुजंग आसन हुआ, या फिर Okay, कुछ okay, ऐसा। that's fine. Yeah, yeah.
What is the difference between yoga and meditation? सर योगा एंड मेडिटेशन में सर योगा जो होता है वो पर्टिकुलरली फिजिकल एक्टिविटी, उसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, और मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता है। I don't मेडिटेशन में think हमारा so. सर कंसंट्रेशन रहता है बेसिकली माइंड माइंड का। Okay. So you are a regular practitioner of yoga and meditation? यस सर। Okay. So how do you do meditation? Because what is meditation like when you can you explain that process? यस सर, मैं यूजुअली विपस्सना मेडिटेशन परफॉर्म करती हूँ सर। उसमें ये होता है कि हमें ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी होती, जस्ट हाउ डू वी इनहेल एंड हाउ डू वी एक्सहेल, हमें उस पर फोकस करना होता है Why do you need to focus on breathing? सर। बिकॉज इससे ना it help us to remain calm, and we can focus, we can increase our concentration. Hmm. What time do you do meditation? Yes sir. You told you regularly do meditation, right? What time do Yes you sir. do generally? In the morning. Okay. Yeah, that's it from me, Divya. Yes sir. So Vijender will give you feedback. After that, I'll give you the feedback. ओके दिव्या, आपके पास एक तो आप ना एक्सक्यूज नहीं देने हैं, डोंट गिव एक्सक्यूजेस while answering. I felt that many times you start giving excuses like why you are sitting idle and why you are not doing some job, and you were telling so many things like I could not have prepared for PSU, so I did not do job. There are so many students who are coming for the interview with job experience. I mean, they're doing job also and then coming for the interview also, so they will not take that excuse from you. So सर मैं कल भी यही पूछ रही थी, मुझे इसका आंसर नहीं समझ आ रहा क्या देना है एक्चुअली, क्योंकि सर एक्चुअली यही है कि मैंने एग्जाम्स देते जा रही थी ना, तो फिर एग्जाम क्लियर हो गए तो मैं सोचा अब ज्वाइन करूंगी, लेकिन हाँ टाइम ही ठीक है, नहीं तो मिला। उसको बोलने का तरीका ऐसा है ना दिव्या, आपने बोलना कि सर एक्चुअली व्हेन आई कंप्लीटेड माय आर्टिकलशिप, द फर्स्ट एग्जाम आई गेव एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट and I could face the interview. That gave me the motivation that I should now, I'm very close, I should persist and I should not deviate myself and keep preparing. The way of saying is different. You listen to the way you say, it looks like you're giving so many excuses. The way you speak, that is a different actually. That is my point. So you need to tell them, justify them that why you thought that job will not be appropriate for you at this moment. Why you thought that way. That is what you have to tell actually. That's the moment I completed my articleship, I was very clear during my this studies also that eventually I'm going to join public sector. So I was preparing during my graduation also. I was preparing for that, and the moment I completed my articleship, fortunately I got opportunity for interview. And then I thought I'm very close and I should not deviate now, and I should persist with my preparation. And I kept on doing preparation. That's it. This is the way. I mean, if you start exploring more, if you start telling more, it may go in the negative direction. And why not HPCL? That you are also giving very, very long answers. To convince them, you think that you should tell more and you should keep on telling them. This is not the way to convince somebody. You cannot convince them by speaking a lot or keep on speaking. No. To convince somebody, you're very straight and convincing answer should be there. So उनको बोल दीजिए कि sir, I could not get into HPCL, so you can't say that requirement can be different and all. You say sir, maybe there were better candidates than me that day, and maybe my preparation was not to their level. So what about now? Yes sir, now I've overcome some of my, I've done my analysis. So do the analysis, and sometimes telling yourself that okay, it was your shortcoming. Because if you say I don't know why I was not selected, that may not be very good. So you need to tell them that yes, I believe that sir, I was not very much prepared about HPCL as an organization. So some questions were asked to me related to HPCL which I could not answer. So then I realized that yes, I should know more about the organization for which I'm going for interview. Are you ready for ONGC today? Yes sir, I've gone through the website of ONGC. That way, I mean, you should be very clear. I want a candidate who is very clear in explaining, not a candidate who is confused. I mean, I could not get selected, sir. That organization requirement is different. Yours is different. They did not find me suitable. You find me suitable. No, I mean, that is a subsidiary of ONGC. If you are not fit for HPCL for some reason,
you can never be fit for ONGC also, except obviously that you have overcome some of the shortcomings which you found in the interview HPCL. That is how you have to proceed, Divya. Got it? तो वो 2-3 चीजों को रिमूव करो एंड द रेस्ट इज ओके. डोंट बी ओवर एक्साइटेड, बी वेरी काम, बी वेरी कॉन्फिडेंट. Yes, Sudhir. Yeah, Divya, you need to brush up your fundamentals a bit. And as Vijender said, be short and very specific to the question asked. Right? For that, you need to brush up your fundamentals of finance and whatever your courses you have done. The simple basic things like the ratios, whatever I asked, the balance sheets, the cash, the current liabilities and all that stuff. The other thing is, if there is anything negative in your CV, you should not expose it to your interviewers. For example, you are rejected in HPCL, you should not inform them ideally in the first place. तो मैं If you're not, ये मेंशन ही नहीं करूँ ना सर HPCL वाला. yeah. So you should not mention anything negative. You have been rejected somewhere. There is no point mentioning you in the interview or in your application process. So all you have to do is all your positive things only has to come out while you are speaking, right? So don't go to the places where, like these kind of places where it can have a negative impact on your interview. So don't mention that you have been attending interviews and all that stuff. You can just say, sir, this is my first interview. I don't think there is any problem in doing that, right? सर फिर ऐसे नहीं होगा, मतलब अभी पहला इंटरव्यू दिया है तो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ. मतलब मैंने सर और भी एग्जाम दिए थे, मैंने एसएससी सीजीएल भी दिया था तो उसका भी No, फर्स्ट फेज you क्लियर हो can गया. tell ongoing. Yeah, you are attending things, but don't mention you have been rejected somewhere. That can devastate your interview. That will be very devastating for your opportunity, right? Don't. You have been pursuing some things, but my first preference is this. You can tell. Okay. And also, when you are telling about your hobbies, you have to be just practicing yoga and meditation itself will not. You have to be knowledgeable about what is yoga, what is meditation, what is the difference, what is the some knowledge has to be done, which is available in the general public domain. So, just go through that. So, because you are told only one hobby, and you have to be very thorough with that hobby, understanding of that hobby. Just practicing will not give you any marks in interview. You need to be knowledgeable about the hobbies which you are talking about. So do a in-depth analysis of what is yoga, what is meditation, what are the origins. So it's available in public domain. Just go through them. It will be very helpful for you in interview when they go to that. If you are thorough with that, it will be a very positive impact on your interview. नहीं सर, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, मतलब इतना डीप में नहीं पढ़ा ओरिजिन वगैरह का. जैसे ये पता है जैसे इंडिया से ओरिजिन है योगा वगैरह So का. yoga is not exercises, for your information, right? There are different types of yoga like Kriya Yoga, Raja Yoga, all that stuff is हाँ there. सर, So 5 टाइप्स ऑफ योगा yeah. So when I asked you about yoga, difference between yoga and meditation, you started off saying that yoga is about doing asanas. It is not about doing asanas. It is much more deeper than that. That's why just go through it. It is there in the public domain. Be very thorough with that. That's what I'm telling. Okay. Yeah, that's it from me, Divya. All the best for your interview. Okay, Divya, all the very best. Thank you.